गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जनवरी में कर्नाटका की प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पोर्टल कावेरी 2 पर कुछ आउटेजेस हुए थे, जिसमें कि सिटीजन सर्विसेज जो है वो डिसरप्ट हुई थी। तो अब ये पता लगा है कि डिसरप्शन जो है वो किसी टेक्निकल स्नैक की वजह से नहीं, बल्कि एक प्लान्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक की वजह से हुई थी। तो ये DDoS अटैक होता क्या है? ये एक ऐसा साइबर अटैक होता है जो डिज़ाइन किया जाता है कि जो नॉर्मल फंक्शनिंग है एक सर्वर की, सर्विस की या फिर नेटवर्क की, उसे आप जानबूझकर ओवरवेल्म कर दो ताकि जो एक्चुअल यूज़र हैं वो उसे एक्सेस ही ना कर पाएँ। तो होता क्या है कि इसमें बॉट्स का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट ट्रैफिक जो है किसी भी सर्वर पर ज़्यादा जो है भेज दिया जाता है, ताकि जो एक्चुअल यूज़र्स हैं उनका नंबर ही ना आए उसको सर्वर को एक्सेस करने में, और उनको वो फिर जो है वो उसको उनकी सर्विसेज जो वो दे रहे हैं वो उनको डिनाई हो जाए। तो किसी एक सिंगल सोर्स से ओरिजिनेट होता है ये, लेकिन मल्टीपल कॉम्प्रोमाइज सिस्टम्स का यूज़ किया जाता है इसमें फ्लड करने के लिए टारगेट को रिक्वेस्ट्स के साथ। तो इसमें जो साइट की बैंडविड्थ है उसको ओवरवेल्म कर दिया जाता है, ओवरलोड कर दिया जाता है, वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉयट किया जाता है, और वीकनेसेस जो होती हैं स्पेसिफिक एप्लीकेशंस या सर्विसेज में उनको अटैक करके जो है वो एक्सेस किया जाता है। तो ऐसा नहीं है पहली बार अब ये ब्रॉड लेवल पर हमें देखने को मिला है। इलॉन मस्क के एक्स प्लेटफॉर्म पर भी जो है वो अगस्त 2024 में अटैक हुआ था। 2015 में माइक्रोसॉफ्ट के गिटहब पर भी चाइनीज़ बेस्ड बॉटनेट्स ने अटैक किया था। तो प्राइमरी गोल होता है DDoS अटैक्स का कि ओवरवेल्म करना एक वेब पोर्टल को, इनएक्सेसिबल बना देना यूज़र्स के लिए। तो इससे जो है डिसरप्शंस होती हैं ऑपरेशंस में। DDoS अटैक्स जो है वो कोई डेटा को डायरेक्टली नहीं स्टील करते हैं, और ये एक डाइवर्जन की तरह भी काम कर सकते हैं, जिसमें कि हैकर्स जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं डेटा ब्रीचेस को और अदर साइबर थ्रेट्स को जो कि अननोटिस रह जाते हैं। फ्रीक्वेंट DDoS अटैक्स जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी को भी हार्म करते हैं। तो ऑफ कोर्स क्या किया जाना चाहिए इसमें? ट्रैफिक फ़िल्टरिंग मैकेनिज़म्स का यूज़ करो ताकि डिफरेंशिएट कर सको आप लेजिटिमेट और मैलिशियस ट्रैफिक के बीच में। मॉनिटरिंग टूल्स का इस्तेमाल करो ताकि डिटेक्ट किया जा सके अनयूजुअल ट्रैफिक पैटर्न्स को अर्ली ही। रिस्ट्रिक्ट करो नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट पर यूज़र्स भी, ताकि जो है वो ओवरवेल्म ना हो आपका जो है सर्वर। और रॉबस्ट ऑथेंटिकेशन जो है वो इम्प्लीमेंट करो ताकि जो है ये बॉट्स वगैरह जो आपकी वेब सर्वर को एक्सेस ना कर पाएँ। यूज़र्स को भी एजुकेट करो कि वो फ़िशिंग रिस्क से बचें, और एक डेडिकेटेड सिक्योरिटी टीम भी होनी चाहिए जो मॉनिटर करे, डिटेक्ट करे और रिस्पॉन्ड करे ऐसे इस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स को इफ़ेक्टिवली। तो इस अटैक से जो है कावेरी पोर्टल जो था उसमें सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिले प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में, और उससे सिटीजन सर्विसेज डिसरप्ट हुई थी। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रिन्यूड इंडिया US कॉपरेशन। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिन्यूड इंडिया US कॉपरेशन देखने को मिला है, जो कि एक सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक विन है इंडिया के लिए। और इसमें 3 गेन्स हमें इमर्ज होते हुए दिख रहे हैं: रीअफर्म्ड कमिटमेंट टू 1 to 3 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, रिकॉग्निशन ऑफ पास्ट स्टैग्नेशन, और बेनिफिट्स ऑफ इंडिया US न्यूक्लियर डील। ठीक है, तो US की प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड स्टैंस के बावजूद भी रिन्यूड न्यूक्लियर कॉपरेशन देखने को मिल रहा है हमें, जिसमें कि हम अमेरिकन डिज़ाइंड रिएक्टर्स को जो है वो जॉइंटली बिल्ड करेंगे। तो ये पैक्ट जो है लोकल मैन्युफैक्चरिंग और पोटेंशियल टेक ट्रांसफ़र के ऊपर फोकस है। ठीक है, तो एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमें अपने रिएक्टर टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइज करने की। तो इंडिया जो है प्राइवेट सेक्टर एक्सपर्टीज़ को लिवरेज करेगा। इंडिया के पास एक्सपीरियंस है 220 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स बनाने का। अब उसी को ही जो है हम और ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनाएंगे। तो US की कुछ कंपनीज़ हैं जैसे हॉलटेक इंटरनेशनल, उनके साथ डिस्कशंस चल रही हैं। अब हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के ऊपर कोलैबोरेट करेंगे। तो ये इंडिया और US क्यों कोलैबोरेशन कर रहे हैं? ताकि चाइना से कम्पीट कर सके। तो इंडिया के जो टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस हैं और US की जो हाई लेबर कॉस्ट हैं, उसकी वजह से चैलेंजिंग हो जाता है चाइना के साथ इंडिपेंडेंटली कम्पीट करना। तो इसीलिए अब हम ये दोनों हाथ मिलाकर जो है चाइना से कम्पीट करेंगे। तो हॉलटेक इंटरनेशनल इवन इंडिया में भी अपनी ऑपरेशंस बढ़ाएगा। तो इससे जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी इंडिया के न्यूक्लियर सेक्टर में, और फुल स्केल सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशन हो पाएगा। तो हम फोकस करना चाहते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का, क्योंकि इसका आगे का फ्यूचर में बहुत स्कोप है, और सस्टेनेबल बनाना, इसको कमर्शियली वाइबल ऑप्शन बनाना एनर्जी सेक्टर में, ये हमारा फोकस रहेगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं दिल्ली अर्थक्वेक। ये टॉपिक आपके
इन्वायरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एक 4.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक स्ट्रक हुआ है नेशनल कैपिटल में। दिल्ली जो है वो एक सिस्मिकली एक्टिव रीजन है। जो यहाँ पर ट्रेमर्स फील होते हैं सिटी में, वो फार ऑफ प्लेसेस से आते हैं अदरवाइज, अफगानिस्तान या हिमालयन रीजन से। लेकिन जो ये रीसेंट अर्थक्वेक था ये दिल्ली से ही आया, ठीक है। तो इससे जो है डिस्कशंस जो है वो रेज हो रही हैं कि सिटी का सेस्मिक रिस्क कितना है। तो दिल्ली वैसे जोन 4 में आता है इंडिया के अर्थक्वेक हैजर्ड मैप में, जो कि सेकंड हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ रिस्क है। जोन 4 एरियाज़ में MSK 8 तक के इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आ सकते हैं, ठीक है। तो दिल्ली और जो सराउंडिंग रीजन्स है वहाँ पर मल्टीपल स्मॉल अर्थक्वेक्स आते ही रहते हैं पिछले 5 साल में। तो दिल्ली जो है वो अरावली दिल्ली फोल्ड बेल्ट का ही पार्ट है, जो कि सदर्न और ईस्टर्न राजस्थान से लेकर हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। तो जियोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं यहाँ पर मिलियंस ऑफ ईयर्स में। और अनलाइक हिमालयन अर्थक्वेक्स, जो कि सबडक्शन ऑफ इंडियन टेक्टोनिक प्लेट की वजह से होते हैं यूरोपियन प्लेट के नीचे, अर्थक्वेक जो अरावली दिल्ली फोल्ड बेल्ट में आ रहे हैं ये प्री एग्जिस्टिंग जियोलॉजिकल फॉल्ट्स की वजह से होते हैं। ये रीजन जो है वो सिस्मिकली एक्टिव तो रहा है पास्ट में, टेक्टोनिक एक्टिविटी भी जो है यहाँ पर धीरे धीरे स्लो डाउन होती जा रही है, ओके। तो कई दिल्ली रेजिडेंट्स ने कहा कि उनको एक पेक्यूलर साउंड देखने को मिली है, सुनने को मिली है एक्चुअली। तो अर्थक्वेक साउंड प्रोड्यूस करते हैं बट इतनी फ्रीक्वेंसी पर नहीं करते जितनी ह्यूमन हेयरिंग उसको सुन पाए। तो यूजुअली जो है ये जो आपको साउंड में देख सुनने को मिली होगी, ये शेकिंग ऑफ बिल्डिंग्स या ऑब्जेक्ट्स की, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स की सुनने को मिली होगी। तो मेजर अर्थक्वेक जो है दिल्ली में आना बहुत ही अनलाइकली है। दिल्ली का जो टेक्टोनिक सेटअप है वो हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक्स को अभी जो है वो प्रेजेंस जो है वो नहीं दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अर्थक्वेक स्वैम। ये टॉपिक भी आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है ग्रीस के सेंटोरिनी आइलैंड्स में और नियर बाय आइलैंड्स में, क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल सिस्मिक इवेंट्स देखने को मिल रही हैं कंपेरेबल इंटेंसिटी की, जो कि एक स्मॉल एरिया में रिलेटिवली क्विक सक्सेशन में अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। तो कई लो इंटेंसिटी अर्थक्वेक्स वहाँ पर आए हैं। तो जब सिस्मिक एनर्जी पाइल अप होती है इनसाइड द अर्थ और रिलीज़ होती है स्मॉल अमाउंट्स में, तो ये अर्थक्वेक स्वाम वहाँ हमें फिनोमिना देखने को मिलता है, ओके। तो ये स्वॉर्म सीक्वेंसेस क्यों होती हैं? फ्लूइड की मूवमेंट से कई बार होती हैं। फ्लूइड रिलीज होता है डीपर मैग्मा में या सर्कुलेट होता है विद इन एक्टिव जियोथर्मल एरियाज में। तो उसके से क्या होता है, फॉल्ट स्लिप हो जाता है क्रैक्स पर, ठीक है। तो इसके जहाँ जहाँ पर वाटर मूव हो रहा है वहाँ पर ये फिर अर्थक्वेक आने लग जाते हैं। एक्टिव वॉल्केनिज्म से भी होता है। कभी कभी मैग्मा की मूवमेंट भी जो है वो अर्थक्वेक को कॉज करती है। फिर जो है कई बार स्लो स्लिप भी होती हैं जो है सबडक्शन जोन्स में। तो वहाँ पर भी जो है ये अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नक्शा प्रोग्राम। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट ने नक्शा प्रोग्राम जो है वो इनाग्रेट किया है, जो कि क्रिएट करेगा, अपडेट करेगा लैंड रिकॉर्ड्स को अर्बन एरियाज़ में, ताकि एक्यूरेट और रिलायबल डॉक्यूमेंटेशन हो सके लैंड ओनरशिप की। ये इनिशिएटिव जो है वो एम्पावर कर रहा है सिटीजन्स को, ताकि रिड्यूस हो सके लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स। ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करेगा। सर्वे ऑफ इंडिया जो है टेक्निकल पार्टनर है इस नक्शा प्रोग्राम में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अपीडा। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, उन्होंने अपना पहला कमर्शियल ट्रायल शिपमेंट जो है वो पोमोग्रेनेट्स का ऑस्ट्रेलिया में जो है थ्रू सी भेजा है। अपीडा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एस्टैब्लिश्ड जो है 1985 में एक बॉडी है, जो कि एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है ऑफ कोर्स, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है। एक्सपोर्ट ऑफ शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट और प्रमोशन का ध्यान रखती है। फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, इन्फॉर्मेशन देना, गाइडलाइंस देना शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स पर, ये इसका काम है। स्टैंडर्ड सेट करना, रजिस्ट्रेशन ऑफ एक्सपोर्टर्स का करना, पैकेजिंग और मार्केटिंग को इम्प्रूवमेंट करना, इंस्पेक्शन करना प्रोडक्ट्स की, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स करना, ये सब इसके कुछ जो है वो फंक्शंस हैं, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रोजेक्ट वाटर वर्थ। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेटा ने अनाउंस किया अपना मोस्ट एम्बिशियस सबसी केबल प्रोजेक्ट, जिसका नाम है वाटर वर्थ। ये 50,000 किलोमीटर लॉन्ग केबल जो है वो डालने का प्रोजेक्ट है, जो कि इंडिया, यूएस, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और कुछ की रीजन्स को कनेक्ट करेगी। 7,000 मीटर तक की डेप्थ में ये जो है केबल्स डाली जाएंगी। प्रोजेक्ट जो है वो एआई का इस्तेमाल करेगा एनहेंस करने के लिए सबसी केबल इंफ्रास्ट्रक्चर को, और एनहेंस्ड बरियल टेक्निक्स का भी यूज़ करेगा। तो इसके थ्रू जो है मशीन लर्निंग मॉडल्स जो हैं उनको लिवरेज किया जा सकेगा, प्रिडिक्ट और मिटिगेट किया जा सकेगा पोटेंशियल डिसरप्शंस को, ग्रेटर इकोनॉमिक कॉपरेशन, डिजिटल इंक्लूजन और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन रीजन्स में हो सकेगी, ओके।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज धर्म गार्डियन। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज धर्म गार्डियन इंडिया और जापान के बीच में माउंट फूजी जापान में जो है वो होने वाली है। एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और जापान के बीच में होती है। एनुअल एक्सरसाइज है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया और यूएस रिसेंटली प्लान कर रहे हैं कि वो इंडिया जो है प्रोक्योर करेगा जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। को प्रोडक्शन भी करेगा ऑफ कोर्स। ये मैन पोर्टेबल फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो कि डिज़ाइन किया गया है हैवीली आर्मर्ड व्हीकल्स को डिफीट करने के लिए। इसकी इफेक्टिव रेंज जो है वो 2.5 किलोमीटर्स है। ओके, so now let us see all these topics in English. So the first topic is distributed denial of service attack. This topic is important for your science and security section. So in January, Karnataka's property registration portal Kaveri 2 has faced several outages, disrupting citizen services. And this disruption was not due to technical glitches but a deliberate DDoS attack. So what is DDoS attack? It is a cyber attack which is designed to disrupt the normal functioning of a server, service, or network by overwhelming it with excessive internet traffic. Unlike a denial of service attack, which originates from a single source, DDoS basically uses multiple compromise systems, and the aim is to use the botnets to flood the target with the requests. So, what happens is that if you have a website or a server, several botnets would start using your or accessing your server at the same time, so that's to overload it or overload your site's bandwidth, so that the actual users are denied the service. Okay, so this also exploits your vulnerabilities in network protocols, and it then attack weaknesses in specific applications or services. So Elon Musk's X platform has also suffered a massive DDoS attack in the past year. Similarly, Microsoft owned GitHub was also targeted by a China-based botnet. So the primary goal of a DDoS attack is to overwhelm a web portal, making it inaccessible to actual or genuine users. So this leads to disruption in operations. So while DDoS attacks do not steal data directly, they can serve as a diversion, allowing the hackers to execute data breaches or other cyber threats unnoticed. So frequent DDoS attacks can harm an organization's credibility, making customers and partner question its ability to secure digital services. Okay. So how can we mitigate the DDoS attacks? So organizations which use traffic filtering mechanisms to differentiate between legitimate and malicious traffic prevent overload. Monitoring tools can be used to detect unusual traffic patterns early. Restricting the number of requests per users within a set time frame also would help prevent the system from being overwhelmed. Implementing robust authentication, educating users on phishing risks, and having a dedicated security team would also help in monitoring, detecting, and responding to security threats effectively. So this attack on Kaveri 2 portal crippled the portal, causing a significant drop in property registrations and disrupting the citizen services as well. Okay. So the next topic is renewed India-US cooperation. This topic is important for your international relations. So renewed India-US nuclear cooperation sends a diplomatic win for India, and three gains have emerged: a reaffirmed commitment to the 1 to 3 civil nuclear agreement, recognition of past stagnation, and a push to maximize the benefits of the Indo-US nuclear deal. Okay, so despite the US protectionist trade stance, the renewed nuclear cooperation and commitment to jointly build American designed reactors in India is a boon for India. So, this pact has emphasized local manufacturing and potential tech transfer also, deviating from Washington's usual push to retain manufacturing within the US. So, this new nuclear deal would provide India with an opportunity to modernize its nuclear technology. We already have experience with 220 megawatt pressurized heavy water reactors, and India aims to leverage its private sector expertise to enter into the growing small modular reactor segment. Okay, so India's Department of Atomic Energy is in discussions with Holtec International, a US-based company, to explore the SMR collaborations, because both India and US they want to compete with China. In India, we have technological limitations. US has high labor costs, so competing with China independently is difficult. That's why we have joined hands together.
Holtec International would expand its operation in India. It would establish a nuclear technology campus in Pune, and the company is also anticipating significant foreign investment in India's nuclear sector. So this agreement, the 1 to 3 agreement between the two sides, which was signed in 2007, aims to foster full civil nuclear energy cooperation, but it faced significant obstacles due to legislative challenges. But now we are changing the gears towards small modular reactors, and these are gaining prominence also as a sustainable and commercially viable option in the energy sector. So that's why we are cooperating with several US energy companies on this particular SMR sector. Okay. So the next topic is Delhi earthquake. This topic is important for your environment section. So a 4.0 magnitude earthquake has struck the national capital recently, and Delhi is located in a seismically active region. So although most tremors felt in the city originate from far off places like Afghanistan and Himalaya, the recent one originated within Delhi itself. This event has sparked discussions about the city's seismic risk. So Delhi, we know that it falls in the zone 4 of India's earthquake hazard map, meaning that it is the second highest category of risk. Zone 4 areas can experience MSK 8 intensity, making them vulnerable to structural damage. So, Delhi and its surrounding areas have been recording multiple small earthquakes in the last 5 years. Delhi is part of the Aravalli Delhi Fold Belt, which is a geological structure that extends from southern and eastern Rajasthan to Haryana and Delhi. This region has undergone significant geological changes over millions of years, and unlike the Himalayan earthquakes, which are caused by the subduction of Indian tectonic plate under the Eurasian plate, earthquakes in the Aravalli Delhi Fold Belt occur due to pre-existing geological faults. Tectonic activities have slowed over time here. Okay, so some residents also reported that they heard a peculiar sound. Of course, earthquakes do produce sound, but these sounds are not so high, and they are beyond human hearing. But large earthquakes can create audible sounds as well, but this earthquake was not as loud as or as strong as to create audible sounds. So perhaps these were the sounds of shaking of buildings, objects, or underground structures. So the possibility of a major earthquake occurring in Delhi is extremely low. So Delhi's tectonic setup does not indicate the presence of large stress buildup, which is required for such high magnitude earthquakes. So the next topic is earthquake swarm. This topic is important for your environment section. So a state of emergency has been declared on Greece, Santorini, and nearby islands, where multiple seismic events have occurred. In a small area in a relatively quick succession. So it involves a series of many low intensity earthquakes, and seismic energy piles up inside the earth and it is released in small amounts. Then it is called earthquake swarm. So what causes these swarm sequences? So sometimes it's fluid movement. In volcanic environments, we see that fluid released from deeper magma or circulating within active geothermal areas. Then earthquake gets triggered by fluids which occur as fault slip on the cracks and faults through which the water is moving. A magma movement can also act as the driving mechanism for swarms. In such a case, earthquakes commonly occur near the crack tip. A slow tip event is also essential in earthquake in slow motion. So these slow slip movements can also cause these earthquakes. Okay. So the next topic is Naksha program. This topic is important for your governance section. So Union Minister of Rural Development is inaugurating the Naksha program recently, has inaugurated the Naksha program recently. So this program aims to create and update land records in urban areas to ensure accurate and reliable documentation of land ownership. This initiative will empower citizens and reduce land related disputes, and it will foster transparency, efficiency, and support sustainable development. So Survey of India is the technical partner for this Naksha program. Okay. So the next topic is APIDA. This topic is important for your economy section. So Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority has completed India's first ever commercial trial shipments of premium Sangola and Bhagwa pomegranates to Australia via sea. So APIDA was established by Government of India through an Act of Parliament in 1985. It works under the Ministry of Commerce and Industry. The aim is to develop and promote the export of scheduled products.
It provides financial assistance, information, and guidelines for the development of scheduled products. So it sets the standards and specifications for the scheduled products, registration of exporters of the scheduled products, improved packaging and marketing of scheduled products, carrying out inspection of products to ensure the quality of such products, and even collection of statistics from owners of factories or establishments and publications of such statistics. Okay. So the next topic is Project Waterworth. This topic is important for your science and tech section. So recently, Meta has announced its most ambitious subsea cable program called Waterworth. This project stretches over 50,000 kilometer long cable, which connects India, US, Brazil, South Africa, and other key regions. This cable will uh, reach depths of up to 7,000 meters in deep waters, and this project is going to use AI to enhance subsea cable infrastructure. It uses enhanced burial techniques in high risk fault areas. So, what will Project Waterworth do? This will leverage advanced machine learning models to predict and mitigate potential disruptions, enhancing the resilience of subsea networks. This will also facilitate greater economic cooperation, digital inclusion, and open opportunities for technological developments in these regions. Okay. So the next topic is exercise Dharma Guardian. This topic is important for our security section. So exercise Dharma Guardian between India and Japan is scheduled at Mount Fuji, Japan. So it's a joint military exercise between the two sides, and it occurs annually. Okay, it is conducted alternatively in India and Japan. So the next topic is Javelin anti-tank guided missile. This topic is important for your security section. So India and US have recently announced plans to pursue new procurements and co-production arrangements for Javelin anti-tank guided missile. So it is a man-portable fire and forget anti-tank guided missile, which is designed to defeat. Which was designed to defeat heavily armored vehicles. So it has been developed jointly by American defense companies Raytheon and Lockheed Martin. So this anti-tank guided missile has an effective range of about 2.5 kilometers. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.